से याद कर सकते हैं, बट वो 10-11 रिएक्शंस की बेसिस जो है वो समझना जरूरी है क्या है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, पहले हम ये बात करेंगे कि प्यूरिन्स हैं क्या, ये जो रिंग्स हमने दिखाए हैं इनके नाम क्या क्या है, और ये कब ये न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, कब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, फिर इनकी जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी प्यूरिन्स की और पिरिमिडीन्स की, वो क्या हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड के प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सोर्सेज क्या हैं, वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, वेदर हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज कर सकती है या वो हमें कहीं से बोरो करना पड़ते हैं या डाइट में लेने पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, व्हाई डू वी नीड देम, हमें क्यों चाहिए हमारी सेल्स को, टिश्यूज को। देन उसके बाद हम इसका पाथवे डिस्कस करेंगे, द प्यूरिन पाथवे, हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर इन दैट पाथवे, और फिर उससे एंड प्रोडक्ट क्या है, और फिर उस एंड प्रोडक्ट से हम फर्दर क्या चीज बनाते हैं। एंड दो पाथवे हैं इसके, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज वर द लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव। So first we will talk about what is a nucleoside and what is a nucleotide. So we know that nucleoside is something which is made up of a nitrogenous base. That means it will have a nitrogenous base, a ring structure, and along with that nitrogenous base, a pentose sugar is attached. And that type of pentose sugar is ribose sugar. And we know that हमारे डीएनए आरएनए में क्या चीज है, डीएनए आरएनए में भी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, राइबोज शुगर्स हैं और नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो न्यूक्लियोसाइड इज ए नाइट्रोजनस बेस विद ए राइबोज शुगर। एज यू कैन सी दिस इज a nitrogenous base, as you can see two rings with some carbons and nitrogens in it. Purine हमने क्या बात की, two ring structure है, so this is a nitrogenous base which is linked, attached with a pentose sugar which is a ribose. So this is a nucleoside. So when a nitrogenous base combines with ribose, it is known as a nucleoside. What about the nucleotide? Nucleotide have much more the same recipe, as it also contains a nitrogenous base, this one, and along with the nitrogenous base is it do contain a same pentose sugar, a same ribose, and additionally with this phosphate, this ribose sugar, it have some phosphate groups within it. So as you can appreciate that there is no difference in between these two structures, the same two-ring purine, the same ribose, but the only difference is lying within the addition of phosphate molecules within this. So when phosphate is attached to a sugar, it is known as a nucleotide. So this is the primary basic difference in between a nucleoside and a nucleotide. Now, what are the difference in between the purines and pyrimidines? So for the sake of simplicity, I will not go into the detail of both the structures because it is very much detailed. But for the sake of simplicity, what I want you to remember is your purines are the two-ring structures, and their names are adenine and guanine, right? So these two-ring structures are protein, and we know that are purines, and we know that our DNA backbone is made up of what? Some adenine, guanine, thymine, cytosine, uracil, right? So that means the DNA or RNA molecules contains some purines in it, which are the adenine and guanine. And remember, they have two rings. What about the pyrimidines? Pyrimidines are also the same nitrogen and carbon containing compounds, and they are also the integral part of our genetic material. But these are not adenine and guanine. They are the single rings. They are single ring structures, and their names are cytosine, thymine, and uracil. So there are three pyrimidines.
cytosine, thymine, and uracil, and two purines, adenine and guanine. So these are the differences in between these two structures. Thymine, cytosine are present in DNA along with the adenine and guanine, while in RNA we do not have thymine. Instead of thymine, we do have uracil in RNA. Okay, so these are the differences in between purines and pyrimidines. What is the significance of these nucleotides in our body? They are precursors of DNA and RNA synthesis, as we just talked about in our introduction, that they give rise, they make some building blocks, they connect with the phosphodiester bond and make a polymer and make a block of DNA or RNA molecule. These are the essential carriers of energy. Since what we are talking about, that they contain a nitrogenous base plus some additional phosphate groups in it, 2 or 3, right? Or 1 as well. So our cellular currency, our energy currency is actually ATP. And for the synthesis of ATP, this ATP is derived, made up of these nucleotide bases. Then they are the components of the cofactors. We know that we get these cofactors from where? We get these cofactors from the vitamins, NAD and FADs, coming from niacin and riboflavin, right? So NAD, which are actually the nicotinamide adenine dinucleotide, it is also a nucleotide. FAD similarly, flavin adenine dinucleotide is again a nucleotide. So they are the coenzymes or cofactors coming from the vitamins. Then we need them for the formation of some very important intermediates in various cellular pathways, such as UDP glucose, where we studied that UDP glucose when we were synthesizing some glycogen from the glucose. So we are using primer, UDP primer as well, and UDP glucose over there as well. So these are important UDP and CDP molecule, which are the dinucleotide, are intermediate, which get connected with some molecules and facilitate some sort of reactions. Okay, then we have cyclic AMP and cyclic GMP. If you look at this AMP, which is adenosine, that means coming from adenine, monophosphate, so that means it is also a nucleotide. Then we have cyclic GMP, which is what? Which is a guanine monophosphate nucleotide, right? So these are the cyclic AMP and cyclic GMP are also nucleotide, which are required for the signal transduction and they work as second messenger within the cell, which carry information from the external world of the cell and convey that information within the cell to the nucleus or other proteins working in the cells. So these all are the important functions of the nucleotides. For these purposes, for these functions to perform in the cells, we need to synthesize these nucleotides in the cells. Now, how these purine nucleotides are synthesized in our body? कैसे हमारी cells बनाते हैं, different organ systems बनाते हैं in purines को. So basically there are two pathways which are responsible for the synthesis of these nucleotides. Number one, which is known as de novo synthesis of nucleotides. So when we say de novo synthesis, that means that this is the synthesis within the cell from the scratch. That is, each and every single atom of these purine ring is being built, is being manufactured within the cell. So this is the synthesis of nucleotide from the scratch within the cell. So this is known as de novo synthesis, and it starts with the metabolic precursors such as the atoms can come from amino acids, from ribose 5-phosphate, from carbon dioxide, and from one carbon unit. The most famous one carbon unit in our body are coming from the tetrahydrofolates, right?
these nucleotides. De novo synthase भी करते हैं आपकी बुक्स पे आएगा पीआरपीपी से के अंदर राइबोस शुगर है तो फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट विल एन वन ये कार्बन जो है नंबर 2 पे ये आ रहा है वन कार्बन ट्रांसफर से तो एक चीज तो ये है नंबरिंग पोजीशन एंड सो ये याद कर रख लें कि इन ऑर्डर्स कि कहाँ पे क्या रिएक्शन एक, एक इस रिएक्शन में एक तो ये कि रिएक्शन क्या हो रहा है और उस रिएक्शन में क्या चीज ऐड हो रही है तो इस तरह से आपको एंजाइम का नाम भी याद करने में आसानी हो जाएगी और पाथवे भी याद करने में आसानी हो अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिमेंबर व्हाट्स हैपनिंग इन द फर्स्ट स्टेप
हेलो, आप लोग सर स्क्रीन, दोबारा स्क्रीन शेयर कर दे, ओके स्क्रीन शेयर कर दीजिए दोबारा प्लीज, ओके स्क्रीन शेयर कर दीजिए दोबारा प्लीज। राइट, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, राइबोस फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज, ये बड़ा लंबा नाम है, एंड दिस इज रिटन इन सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं इस ब्लू वाले से ओके। व्हाट हैपेंस इन स्टेप टू? स्टेप टू में ग्लूटामीन, और जब इसके अंदर ग्लूटामीन ऐड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ, इसने अमाइड ग्रुप की ट्रांसफर की है पीआरपी से लेके, सो व्हाट हैपेंस then it will make another compound which is glycinamide. I will show you in the next slide. But these two steps, these two reactions are important in the synthesis of purines. Why? Because ये step reaction दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। यस सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ग्लाइसिमाइड रिबो, हम बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? हेलो, अरे ओवरऑल इंटरनेट अभी डाउन हुआ था, लेकिन अभी कनेक्ट। ठीक है। सो तो ग्लाइसिन इज एडेड इन रिएक्शन 3 मेकिंग ग्लाइसिनेमाइड राइबोस फॉस्फेट और ग्लाइसिनेमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, आप दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इन स्टेप 4, इस ग्लाइसिनेमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड में अगर टेट्राहाइड्रोफॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाए, टेकिंग फ्रॉम फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट अलग हो जाएगा और फॉर्माइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा इस ग्लाइसिनेमाइड के साथ, तो इट विल मेक फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय यूजिंग an enzyme formyl transferase. So this was reaction 4. In reaction 5, what's happening? Glutamine is being added. Glutamine add हो रहा है किसमें? Formyl glycinamide ribonucleotide में glutamine add हुआ, तो it will make formyl glycinamidine ribonucleotide. Okay, and the enzyme is again amidotransferase. In step 6, in this formyl glycinamide ribonucleotide, there is addition of ATP,
तो जहां एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है वहां पे एंजाइम कौन सा होता है, वहां एंजाइम होता है सिंथेटेज। तो सिंथेटेज विल कन्वर्ट दिस फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड इनटू व्हाट, imidazole ribonucleotide. And if you can recall, imidazole is something which acquires a ring structure. Remember the structure of hemoglobin, histidine. Histidine contains a imidazole ring. So the same imidazole ring. तो यहाँ पे आके आपका एक ring formation हो जाता है, ठीक है? In reaction 6, making 5 amino imidazole ribonucleotide in the presence of amino imidazole ribonucleotide. सर आज है थोड़ा सा नेट का थोड़ा सा डाउन है, हर जगह ही हो रहा है इंटरनेट अभी का। आप म्यूटेड है। I hope students कुछ इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। टॉपिक भी बड़ा डिफिकल्ट है और फिर इंटरनेट का भी इशू चल रहा है। ओके, सो reaction again aspartate is added, which is an amino acid. Carboxy amino imidazole ribonucleotide में जब aspartate add amino imidazole carboxymide ribonucleotide. You can have different names in your book, right? Because ribonucleotide is the older terminology. The older standard textbooks still refer this terminology, but your books will be using okay. तो स्टेप 9 में या रिएक्शन 9 में कोई भी चीज ऐड नहीं हो रही, रादर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रही है, रिमूव हो रही है। और रिमूव क्या हो रहा है, फ्यूमरेट रिमूव हो रहा है, रिएक्शन 9। Succinate lyase in making amino imid. I just want to show, okay, after level reactions or addition of these inosine monophosphate is formed, and once यहाँ पे पाथवे खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट यहाँ से पाथवे शुरू हुआ है to synthesize inosine monophosphate.
रूट सेकेंड रूट में इसी इनोसिन मोनोफॉस्फेट के ऊपर एक रीडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उस आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और वो रीडॉक्स रिएक्शन क्या बना रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है इस इनोसिन मोनोफॉस्फेट को into the xanthine monophosphate, which is nucleotide biologic xanthine में। तो synthetase, GMP synthetase, why GMP consumed in this reaction? IMP, AMP and GMP synthesis. So this is known as salvage pathway. ये कहाँ होता है? डिनोवो सिंथेसिस कहाँ हो रही थी? मेनली इन द लिवर। डिनोवो सिंथेसिस कहाँ नहीं होती? आरबीसीज में नहीं होती, डब्ल्यूबीसीज में नहीं होती और न्यूरॉन्स में नहीं होती, राइट? Salvage pathway is needed for the synthesis of purine in these organs, in RBC, WBCs, neurons and bone marrow. Why? Because these organs, उनके पास एक तो वो मटेरियल नहीं है, पाथवे नहीं है, दूसरा इन 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 ऑर्गन्स को इमीडिएट एनर्जी और इमीडिएट प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। तो दे व्हाट दे डू, दे सेव द फ्यूल, दे सेव द टाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ these things। चाहिए क्या उसके लिए? सैल्वेज पाथवे के लिए आपको दो एंजाइम्स चाहिए। डिनोवो के लिए क्या चाहिए था? राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए था और उसके ऊपर फिर 10 रिएक्शंस, ओके, और उसने फिर आईएमपी बनाया। सैल्वेज पाथवे में आपको ये 10 रिएक्शंस नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज वो ऑलरेडी हुए हुए। आपको सिर्फ दो एंजाइम्स चाहिए और वो दो एंजाइम्स कौन से हैं? वो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेजेस हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है। फॉस्फोराइबोसाइल क्या था? राइबोस 5 फॉस्फेट का डोनर, स्टेप 1, राइट? ट्रांसफरेजेस उनकी ट्रांसफर करता है। तो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेजेस दो जो चाहिए उनके नाम हैं एपीआरटी, व्हिच इज एडिनाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जो क्या करेगा? आपको एडिनाइन बनाएगा। किससे? इंटरमीडिएट्स जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं डीएनए आरएनए की, उससे वापस एडिनाइन बना देगा। दूसरा एंजाइम कौन सा चाहिए? एचजीपीआरटी, विच इज हाइपोजेंथीन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये क्या बनाएगा? ये दो बेसिस बनाएगा, ये ग्वेनिन बनाएगा और हाइपोजेंथीन बनाएगा, राइट? So these two phosphoribosyl transferases are needed for the salvage pathway. Salvage pathway takes place in RBCs, WBCs, neurons, bone marrow, because it is less time consuming and more efficient. Now, how this salvage pathway synthesizes purines by using hypoxanthine. Hypoxanthine अभी हमने कहीं पीछे बात की है, कहीं पे बना था? Yes. Before IMP, hypoxanthine bana tha। Taking the same hypoxanthine, if we use enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, ये क्या करेगा? ये PRPP से राइबोसाइल फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप लेगा और हाइपोजेंथीन को दे देगा। तो जब इसको ये फॉस्फोराइबोसाइल ग्रुप दे देगा तो ये हाइपोजेंथीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द आईएमपी, इनटू द इनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या होगा? अगेन एएमपी एंड जीएमपी, राइट? What happens with the guanine? Guanine uses the same hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, right? तो ये जो हाइपोजेंथीन है ये ग्वानिन से पहले का बेस है, इसलिए सेम एंजाइम दोनों पे एक्ट करता है क्योंकि सबस्ट्रेट मोर और लेस एक ही जैसे हैं। तो ग्वानिन विल ट्रांसफर सम फॉस्फोराइबोसाइल्स एंड कन्वर्टिंग इट इनटू जीएमपी। तो जब जीएमपी बन जाएगा तो वहां से प्यूरिन सिंथेसिस का पाथवे जो है सैल्वेज, दोबारा से सैल्वेज होने लगेगी ग्वानिन की। देन एडेनिन, एडेनिन विल बी यूजिंग the adenine phosphoribosyl transferase।
एडिनिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से लेके एएमपी बनाएगा और फिर एएमपी जो है वापस एडिनाइन की सिंथेसिस करेगा। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है एडिनिन का, but this time enzyme is different. It is not taking adenosine phosphoribosyl transferase. क्यों? यहाँ पे काइनेज क्यों है? यहाँ फॉस्फोराइबोसाइल क्यों है? Why? Because this is nucleoside. इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं। तो जब इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं तो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज इस पे काम नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा। यहाँ पे फॉस्फेट की ट्रांसफर नहीं होगी, फॉस्फेट की ट्रांसफर होगी बाय टेकिंग phosphate from ATP and giving to the adenosine, making AMP, and from AMP the pathway of adenine synthesis will be regenerated. So this is how these specialized cells using these same intermediates, precursors, to again initiate the salvage pathway within the cells. Okay, what happens if there is some congenital abnormality or defect in between these two enzymes, right? Adenine phosphoribosyl transferase or hypoxanthine guanine phosphoribosyl. We will talk about it later on, adenine phosphoribosyl transferase, in some other section. But in this section, just consider the deficiency of hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी? अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ऑब्वियसली हाइपोजेंथीन और ग्वेनिन जो है आईएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब वो आईएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? सेल्वेज नहीं हो पाएंगे, दोबारा से रीसिंथेसिस नहीं होगी। किन ऑर्गन्स में नहीं होगी? कहाँ सेल्वेज नहीं होगी? आरबीसीज में नहीं होगी, डब्ल्यूबीसीज में नहीं होगी, न्यूरॉन्स में नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि यही ऑर्गन्स, यही टिश्यूज, यही सिस्टम्स ज्यादा अफेक्ट होंगे इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से। तो हाइपोजेंथीन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज deficiency leads to a disorder which is known as Lesch-Nyhan syndrome. Lesch-Nyhan syndrome, which is due to the deficiency of HGPRTAs. क्या होता है इसके अंदर? Lesch-Nyhan syndrome के अंदर X-linked recessive disorder है, इनहेरिट करते हैं, और इसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। विच एंजाइम? जो सैल्वेज करता है हाइपोजेंथीन और ग्वानिन को इनटू आईएमपी एंड जीएमपी। तो जब सैल्वेज नहीं होगा तो कौन से न्यूरॉन्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज अफेक्ट होंगे। तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल डेफिशिएंसी, aggression, agitation, self-destructive behavior, and self-mutilation. These children are more prone to do some self-harm. They bite and they get injured by self-biting, self-mutilation. So this is the characteristic of the HGPRTAs. And since this enzyme also affects the production of uric acid, we will see in subsequent lecture, so that उस वक्त आप ये समझ सकेंगे कि ये क्यों यूरिक एसिड लेवल और रीनल स्टोन्स क्यों बन रहे हैं HGPRTAs की डेफिशिएंसी में। But for now, it is to remember that HGPRTAs deficiency की वजह से ग्वानिन और हाइपोजेंथीन कन्वर्ट नहीं होते आईएमपी और जीएमपी में, जिसकी वजह से सेल्वेज नहीं होता, और न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, अग्रेशन, एजिटेशन, सेल्फ म्यूटिलेशन, एंड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। So Lesch-Nyhan syndrome is the metabolic abnormality of purine synthesis. So I just try to make it simple, but in the end I would suggest just go through with the Lippincott, and whatever the terminology for the enzymes is being used in your textbook is sufficient for you. For those 9 reactions, the enzymes that you need to learn, but the basic concept should remain behind. If you just learn किस रिएक्शन में, एक तो रिंग की नंबरिंग और कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, सोर्सेज क्या हैं उन एलिमेंट्स के, दूसरे वो 9 रिएक्शंस में किस रिएक्शन में क्या ऐड हो रहा है, so that you can remember the names of the reactions and the substrates,
और फिर उसके बाद आईएमपी कैसे बना, और आईएमपी के बाद एएमपी और जीएमपी। तो दिस इज फॉर द डिनोवो। एंड डिनोवो के बाद सैल्वेज के लिए यू नीड ओनली टू एंजाइम्स विच आर द फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेजेस, एडेनाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज और hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase. So if you have any questions or queries. No hand raise.